Lucy. Assalamualaikum and how are you? Welcome to my channel Galaxy Solution. Hope you will be okay and enjoying good health. I'm your host Said from Ireland. So today I'm going to tell you a very quick tutorial about COVID-19 and give you some good guidelines. So please watch this video till the end. So first of all, I'm going to thank the Prime Minister of Ireland, Leo Varadkar, and as the government of Ireland has taken immediate precautionary steps to request the people of Ireland to remain at homes for at least 2 weeks and to avoid the unnecessary visits to town, to public place and restaurant and the different like a gathering place. So they think if the people do like that, so that the pandemic disease COVID-19 couldn't be spread. So I think we should need to follow the all rules and procedure of the HSE because it's over safety, guys. So we must stay strong, strict and united and positive and together, so it will get throughout this disease very soon, and we will be back to normal inshallah very soon. So at the end of this video, I'm just going to request the people of Ireland, if you think your life is more important for yourself and your parents and your kids, so please follow the all rules and procedure of the HSE. Wash your hands at least 20 seconds and keep tidy and clean yourself. So now I'm going to talking the people of Pakistan in my language. So मैं अपने तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से, ये पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा कि आप इस वायरस को इतना इजी मत लें, इसको एज अ जोक में ना इसको लें आप। ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक है और ये कितनी ज़िंदगियों को निगल चुका है यूरोप के अंदर। आप इसके बारे में एवरीडे न्यूज़ में सुनते होंगे और अब इसने पाकिस्तान की तरफ रुख किया हुआ है और आई थिंक सो कि पाकिस्तान में गालबन 500-600 से जो एवरेज है वो बढ़ गई है पाकिस्तान में। तो इसके लिए आपको खुद अपनी सेफ्टी करनी होगी। आपको जो जितने भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। आप ये मत सोचें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान के दूसरे इदारे हैं वो आपकी हेल्प करेंगे या ये उनकी हेडेक है, आपकी हेडेक नहीं है। ये आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी होगी। अगर आप समझते हैं कि जो आपकी लाइफ है, जो आपकी ज़िंदगी है, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके खुद के लिए और आपके जो बच्चे हैं जिनके, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको खुद अपनी सेफ्टी करनी होगी। जो मेन रूल्स हैं वो आप फॉलो करें। जो जब आप घर से बाहर जाएं तो अपने जो शूज़ हैं जो आप पहनते हैं, घर वाले जो घर से बाहर जाते हैं जो शूज़ पहनते हैं वो अपने सेपरेट रखें। जो क्लोथ आप पहन के जाएं बाहर वो आपके सेपरेट होने चाहिए। अब ग्लव्स पहने, मास्क का इस्तेमाल करें। और मैंने सुना है कि पाकिस्तान में लोग मास्क इसलिए नहीं पहनते कि कहते हैं जी हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है, हमें अच्छे नहीं लगते। तो ये तो बहुत ही एक ना मानने वाली बात और एक कोई लॉजिक नहीं है इसमें कि जब मास्क नहीं पहनते तो जी हम अच्छे लगते। आपको मास्क पहनना अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो हो सकता है कि जब आप बाहर से हैं तो आपकी फैमिली इफेक्टेड हो जाए। आपको नहीं पता कि हम इसको यूरोप में कैसे टैकल कर रहे हैं, उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि प्लीज़ फॉर गॉड से अपनी सेफ्टी खुद करें और ये मास्क पहनने में कोई शर्म महसूस ना करें, ग्लव्स पहनने में कोई शर्म महसूस ना करें। आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी है। जो गैदरिंग प्लेस है वहाँ पे ना जाएं, शॉपिंग मॉल में ना जाएं, 1 मीटर का फासला रखें और जब आपको खांसी वगैरह आए तो टिश्यू रखें और टिश्यू को मुंह पे रखें और टिश्यू को यूज़ करके फेंक दें, अपनी जेब में दोबारा ना डालें। अगर फ्लू है तो फ्लू आप उसको टिश्यू को यूज़ करें और आपकी जो पॉकेट है उसमें ना डालें, आप उसको फेंक दें, डिस्ट्रॉय कर दें। और एक और बात, जब आपको छींक आए तो आप अपना ये उल्टा हैंड ये मत यूज़ करें। आपको अपनी जो एल्बो है इसको अपने ऐसे रखना है ताकि जो आपके जासीम है वो उसके जो है वो जज़ब हो जाए ताकि वो दूसरे बंदे को ना लग सके। सो प्लीज़ फॉर गॉड से मैं आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सुनते हैं, इफ़ यू थिंक योर लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर किड्स, सो प्लीज़ फॉलो ऑल द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द health and safety. And thanks for watching this video. If you think this video is helpful for you, please don't forget to subscribe my channel and press the bell icons for more upcoming videos. And thank you so much. Allah Hafiz. Lucy.